Okay, Saturday. Today we are going to study your first chapter of footprints without feet. Here, and your first chapter name is A Triumph of Surgery, written by James Herriot. Here, now James Herriot, his real name was James Alfred Waite Oberfrcvs, and he was known by his pen name James Herriot. James Herriot. Okay, the author of this book, or we can say the writer of this book, is James Herriot. Now he was born on 3rd of October 1916, and James Herriot, he was a veterinary surgeon. Here, now let's start. First I'll explain, I'll read out the chapter, I'll explain the chapter, and then I'll give you the hard words meaning. Here, now first, on A Triumph of Surgery, I was really worried about Tricky this time. Who was Tricky? Tricky was a small dog. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress, and I was shocked at his appearance. He had become hugely fat, like a bloated sausage with a leg at each corner. His eyes, bloodshot and rheumy, stared straight ahead, and his tongue lolled from his jaw. Now I was really worried about Tricky this time. मतलब इस पर मैं Tricky के लिए बहुत टेंशन में था. Who saying this? James Herriot. And who is he? He is a veterinary surgeon. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress. James Herriot ने means when veterinary surgeon he saw Tricky, उसकी मिस्ट्रेस के साथ देखा, वो फुल शॉक में था. ओके, किसके अपीयरेंस से? ट्रिकी के अपीयरेंस से. वो बहुत ज़्यादा फैट हो गया था. ब्लॉटेड सॉसेज मीन्स swollen, and sausage means you know that kebab with he was like sausage with a leg at each corner. मतलब उसके legs और body parts obviously वो hugely fat हो गया, तो उसके legs के part भी ऐसे हो गए थे. His eyes bloodshot and rheumy. Rheumy means it's like watery. Okay, stared straight ahead, and his tongue lolled from his jaw means he has become too healthy. बहुत ज़्यादा वो hugely fat हो गया था. Mrs. Pumphrey hastened to explain. Okay, Mr. Pumphrey जो थी वो hastened हो गई. He was so listless. He was so listless. मतलब जो ट्रिकी था वो without energy वाला हो गया था. He was tired. Mr. Herriot, he seemed to have no energy. वो बोल रहा है, किसको बोल रही है? Mr. Herriot को, कि ऐसा लग रहा है कि इसको कोई एनर्जी नहीं है. I thought he must be suffering from malnutrition. किसने बोला? Mrs. Pumphrey ने ये बात कही Herriot को. Who is Herriot? He is a veterinary, okay, surgeon. उसने कहा कि ऐसा लग रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये किससे सफर कर रहा है? malnutrition. So malnutrition is कुपोषण. So I have been giving him some extras between meals to build him up. मतलब जब वो मील यानी उसका जो खाना हो जाए उसके बाद में मैं उसको थोड़ा एक्स्ट्रा देती थी, बिकॉज उसे किसको? मिसेस पंफरी को लग रहा था कि वो थोड़ा ज़्यादा उसे malnutrition हो गया है. Some malt and cod liver oil. Malt, what does malt means? Jaw. Okay, उसको वो भी देती थी. And cod liver oil, that is fish oil, and a bowl of Horlicks at night to make him sleep. मतलब एक Horlicks का बाउल भी देती थी ताकि वो सो पाए. Nothing much really. And did you cut down on sweet things as I told you? वेटरनरी डॉक्टर पूछ रहे कि जैसे मैंने मना किया था कि इसको स्वीट्स नहीं खिलाने हैं ट्रिकी को, तो क्या तुमने वो खिलाना कट डाउन किया? Oh, I did for a bit. मतलब मैंने थोड़े टाइम के लिए किया. But he seemed to be so weak, I had to relent. मतलब वो बोल रही है कि वो इतना वीक लग रहा था कि ना चाहते हुए भी उसने उसे वापस खिलाना चालू कर दिया. He does love cream cakes and chocolates. So who loves this? Tricky. वो बता रही कि ट्रिकी को चॉकलेट्स भी पसंद है, केक्स भी पसंद है. I can't bear to refuse him. मतलब मैं ये बेयर नहीं कर सकती कि मैं उसे मना करूँ. I looked down again at the little dog. वापस उसने लिटिल डॉग की तरफ. किसने देखा? Herriot ने. That was the trouble. ये क्या था? Trouble. Tricky's only fault was greed. क्या था? उसका जो fault था वो greed था. He had never been known to refuse food. वो कभी भी मतलब ये नहीं जान सकता कि वो फूड के लिए मना कर रहा है. He would tackle a meal at any hour of the day or night. वो कभी भी attempt कर लेता था meal को, okay, any time of the hour or night. And I wondered about all the things, okay.
ओके, मिसेस पंफरी हैड नॉट मेंशन, पंफरी ने ये सब सारी चीजें मेंशन नहीं की थी। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, हु इज आस्किंग दिस, क्या तुम इससे एक्सरसाइज करवा रहे हो, ये कौन बोल रहा है, वेटरनरी सर्जन। वेल ही हैज लिटिल वर्क्स विद मी एज यू कैन सी, वो क्या बता रही है, जैसे कि आप देख रहे हो मेरे साथ ये थोड़ा थोड़ा चलता है। बट hot giving, the gardener has been down with lumbago, so there has been no ring throwing lately. So hot giving, the gardener has been down with lumbago means he is having pain in his muscles, so there has been no ring throwing lately. I tried to sound severe, now I really mean this, if you don't cut his food right down and give him more exercise, he is going to be really ill. वो क्या बता रहे हैं, वो एकदम सीवियर बोलने लगा डॉक्टर, और डॉक्टर बोलने लगे कि अगर अभी आप उसका फूड जो खिला है वो अगर कट डाउन नहीं करोगे, उससे ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कराओगे, ओके, तो वो सच में ज़्यादा बीमार हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, आपको आपका दिल कठोर करना पड़ेगा, और जो चीज़ नहीं खिलानी है वो नहीं खिलानी है। एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और उसे वेरी स्ट्रिक्ट डाइट पे रखना है। मिसेस पंफरी wrung her hands, मतलब वो उनके हाथ ऐसे मरोड़ने लगी। ओ आई विल, वो ऐसे हाथ ऐसे करके बोलने लगी, ओ आई विल मिस्टर हेरियट, आई एम श्योर यू आर राइट। ओके, वो बता रही है कि मिस्टर हेरियट को बोल रही है, यस आई एम श्योर यू आर राइट, बट इट इज सो डिफिकल्ट, सो वेरी डिफिकल्ट, वो बोल रही है, या वो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। शी सेट ऑफ हेड डाउन, उसने से सर नीचे किया, along the road as determined to put the new regime into practice immediately, मतलब अब कोशिश करने वाली है नया कोई चीज़ की अगर हम अडॉप्ट करें, नई कोई हैबिट भी अडॉप्ट करें, तो शी इज लाइक टू पुट न्यू regime into practice immediately. I watched their progress with growing concern. उसमें जो प्रोग्रेस था वो उसकी जितनी टेंशन थी वैसे वैसे उसकी प्रोग्रेस को देखने लगे डॉक्टर। ट्रिकी was tottering along in his little pleated coat. He had a whole wardrobe of these coats, drooping for the cold weather and a raincoat for the wet days. See what he is saying. Tottering means to control. Tricky was to control along in his little pleated coat. He had a whole wardrobe, मतलब उसके पास पूरा कपबोर्ड था जिसमें उसके कोट्स थे विंटर वेदर के लिए एंड इवन रेनी वेदर के लिए, उसके वेट डेज के लिए भी उसके पास थे। He struggled on drooping in his harness. I thought it wouldn't be long before I heard from Mrs. Pumphrey. The expected call came within a few days. जो expected call था वो आया, किसको आया, डॉक्टर को। Mrs. Pumphrey was distraught. She was very in tension. We can say she was very distracted. और in हिंदी we can say परेशान। Tricky would eat nothing. Tricky कुछ भी नहीं खा रहा था। Refused even his favorite dishes. वो उसकी फेवरेट डिशेस भी थी वो भी रिफ्यूज कर रहा था। एंड बिसाइड्स ही हैड बॉट्स ऑफ वॉमिटिंग, उसे वॉमिट्स भी हो रहे थे। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन रग पैंटिंग। सो व्हाट इज गिवन हियर, पूरा टाइम उसे वॉमिट भी हो रहा था, बहुत सारी फेवरेट चीज खाने को मना भी कर रहा था, पूरा टाइम वो कहाँ स्पेंड कर रहा था, रग पे लेटे हुए। डिड नॉट want to go for walks, didn't want to do anything, मतलब ट्रिकी को ना तो कहीं वॉक पे जाना है ना तो उसे कुछ करना है। I had made my plans in advance. The only way was to get Tricky out of the house for a period. डॉक्टर बोल रहे हैं मैंने प्लान एडवांस में ही प्लानिंग कर दी है। एक ही तरीका है कि हम ट्रिकी को घर से बाहर निकालेंगे पर्टिकुलर पीरियड के लिए। I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. उसे fortnight के लिए observation के लिए उसे हॉस्पिटल में रखना होगा। The poor lady almost swooned. मतलब she is like much in tension. Okay, she was swooned, मतलब बेहोश जैसे हो गई। Poor lady means who's that? Mrs. Pumphrey. She was sure she would pine and die if he did not see her every day. उसे ऐसा लग रहा है कि वो मर जाएगी, परेशान हो जाएगी अगर वो ट्रिकी को रोज नहीं देखेगी। But I took a firm line. Tricky was very ill and this was the only way to save him. वो क्या बोल रही है, डॉक्टर क्या बोल रहा है कि मैंने बहुत एक फर्म लाइन ली है कि ट्रिकी जो था बहुत बीमार था और यही एक तरीका है जिससे हम ट्रिकी को बचा सकते हैं। इनफैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले एंड फॉलोड बाय मिसेस पंफ्री वेलिंग्स मतलब उसे अभी ले, हमें डॉक्टर बोल रहे इसे हमें अभी ही हॉस्पिटलाइज कर लेना चाहिए। और तब क्या होता है, फॉलोड बाय मिसेस पंफ्री वेलिंग्स मीन्स शी इज क्राइंग। आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग wrapped in a blanket. Okay, he went forward and that dog, the Tricky, was wrapped in a blanket. The entire staff was roused and maids rushed in and out bringing his day bed, his night bed, favorite cushions,
toys and rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl, etc. पूरा entire staff है वो सब उठ गए. They all rose, मतलब सारा ये ट्रिकी के लिए सब कुछ करने लग गए. Okay, realizing that my car would never hold all this stuff, I started to drive away. उसने बोला कि मुझे ऐसा लग रहा है जो मिसेस पंफरी के जो सारा वो क्या बोल रहा है, मिसेस पंफरी की जितने सारे स्टाफ वाले थे सारे उठ गए. वो उसकी क्वेश्चन ला रहा है, वो उसे बाउल ला रहा है, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सपर बाउल, एवरीथिंग. वो अभी हैरियट को यानी कि डॉक्टर हु वाज वेटरनरी, उसे अभी रियलाइज हो रहा है कि अभी मेरी कार, रियलाइजिंग दैट माय कार वुड नेवर होल्ड ऑल दिस स्टफ, मतलब मेरी कार इतना सब होल्ड नहीं कर सकती. उसने गाड़ी ड्राइव करना चालू कर दिया. एज ए टू डॉग मिसेस पंफरी विद अ डिस्पेयरिंग क्राई थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो. उसने कोट फेंक दिया. आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव. एवरीबडी वाज इन टीयर्स, मतलब सबके सब रोने लगे जब वहाँ से ट्रिकी को लेके गए. Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by side. I patted the head and Tricky made a brave effort to wag his tail. अब क्या बता रहे हैं, जब वो वेटरनरी वो जो को ड्राइव करे उनकी सीट के जो बाजू वाली सीट पे कौन था, ट्रिकी था. सो द वे ही वाज फीलिंग सो पैथेटिक फॉर दैट लिटिल एनिमल, जब उसने सिर के ऊपर हाथ घुमाया तो ट्रिकी ने एक ब्रेव एफर्ट किया. उसने बहुत हिम्मत से उसकी जो टेल थी वो थोड़ी वेट की, मीन्स हिलाई. Poor old lad, I said, you have not a kick, you haven't kick in you, you have not a kick in you, but I think I know a cure for you. वो क्या बोल रहे हैं, अभी तुम्हारे में कोई kick नहीं है, means you're not having that much energy, but I'll cure you. Who's saying this? This said by doctor, means this veterinary. At the surgery, the household dogs surged round me. Tricky looked down at the noisy pack with dull eyes. When put down, lay motionless on the carpet. सारा बता रहे जब उसे वहाँ लेके गए उन्होंने कैसे परफॉर्म किया. The outer dogs, after sniffing around him for a few seconds, decided he was an uninteresting object and ignored him. I made up a bed for him in a warm, loose box. किसने, डॉक्टर ने क्या, वेटरनरी ने क्या किया, एक बेड बनाया एक warm, loose box में, to the one where the other dogs slept, जहाँ सारे डॉग्स सोए थे. For 2 days I kept an eye on him. उसने 2 दिन तक उस डॉग पे नजर रखी. Giving him no food but plenty of water. उसने क्या किया, जो सर्जन थे, वेटरनरी थे, उन्होंने क्या किया, उन्हें उसे खाना देने की जगह पर उसे 2 दिन तक भरपूर पानी पिलाया. At the end of the second day he started to show some interest in surroundings. सेकेंड डे के एंडिंग में उसने क्या कर दिया, इंटरेस्ट बताना चालू कर दिया. And on the third, he began to whimper. मतलब whimper when he heard the dogs in the yard. Means he started like little crying जब उसने देखा कि सारे dogs हैं यहाँ. उसने जब सारे dogs को सुना. When I opened the door, Tricky trotted, मतलब trotted out and was immediately influenced by Joe. मतलब क्या किया, when I opened the door, when the Harriot, okay, the writer when he opened the door, Tricky जो था वो दौड़ने लगा बाहर and was immediately, मतलब वो उसने घेर लिया जो से the greyhound and his friends. After rolling him over and thoroughly inspecting him, the dogs moved off down the garden. Tricky followed them, rolling slightly with his surplus fat. Surplus fat means extra fat. Now, later that day, I was present at feeding time. Feeding time जब हो रहा था तब वो कौन present थे वहाँ पे, डॉक्टर was present. I watched while Tristan sloped the food into the bowls. There was the unusual headlong rush followed by sounds of high-speed eating. Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. मतलब अगर उसने जब खाने को दिया है, जब फीडिंग का टाइम होगा तब उन्होंने नहीं खाया तो लास्ट में इट्स लाइक कॉम्पिटिशन एंड दे विल फील कि सारे डॉग्स खा रहे हैं, अगर एक कोई नहीं खा रहा है तो लास्ट में जब उसे खाना है तो इट विल बी लाइक कॉम्पिटिशन. इफ कॉम्पिटिशन वुड बी लाइक अ पार्ट ऑफ हिज मील, लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील. Next, when they had finished, Tricky took a walk round the shining bowls, licking casually inside or two of them. जब सबने फिनिश कर दिया, ट्रिकी जो था वो वहाँ पे राउंड के लिए निकला. Took a walk round the shining bowl, licking casually inside or out of them. Next day, an extra bowl was put out for him. जब फीडिंग हो रही थी एक दिन, दूसरे दिन क्या हुआ, जब सारे बाउल्स में से सारे जो बाउल्स उसमें एक बार और एक्स्ट्रा ऐड कर दिया था किसके लिए, ट्रिकी के लिए. एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम jostling means he was trying like, okay, jostling his way towards
on his progress was rapid. फिर उसकी progress अच्छी होने लग गई. He had no medical treatment of any kind, but all day he ran out with the dogs. क्या यहाँ पे बताया है कि उसे कोई भी medical treatments की ज़रूरत नहीं पड़ी है और वो सारे kinds medical treatments of any kind all day he ran out with the dogs. सारे dogs के साथ उसने भी दौड़ना चालू कर दिया. Joining in the friendly scrimmage, he discovered the joy of being bowled over, tramped on and squashed every few minutes. मतलब वो उछल कूद करना चालू कर दिया उसने. He became an accepted member the gang, an unlikely silky little object among the shaggy crew. Okay, fighting like a tiger for his share at meal times and hunting rats in old hen house at night. He had never had such a time in his life. ये सारा describe कर रहे कि जब वो सारे dogs के साथ मिल गए, सारा enjoy करने लगा. How was he feeling? All the while Mrs. Pumphrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins. I dodged the questions about whether his cushions were being turned regularly, his correct coat worn according to the weather, but I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convalescing rapidly. वो बता रही है कि मिसेस पंफरी को शी वॉज होवर्ड में शी वॉज फीलिंग क्या उसे कोट्स बराबर टाइम से चेंज किए होंगे, वेदर के हिसाब से क्या उसे कपड़े पहना रहे होंगे, क्या उसे कुशन्स को वो डेली चेंज कर रहे होंगे. ओके, बट आई वॉज एबल मीन्स डॉक्टर को लग रहा है दिस जेम्स हेरियट ही इज फीलिंग दैट कि अब मैं इन्हें कुछ आंसर कर सकता हूँ. ओके, कि वो अभी डेंजर से बाहर है और वो जल्दी थोड़ा रैपिडली रिकवर हो रहा है. The word convalescing seemed to do something to Mrs. Pumphrey. She started to bring round fresh eggs, 2 dozen at a time, to build up Tricky's strength. अब वो वापस 2 dozen eggs लाने लग गई ताकि Tricky में strength आ जाए. For a happy period, my partners and I had 2 eggs each for breakfast. To build up Tricky's strength. For a happy period, my partner and I had 2 eggs each for breakfast. But when the bottles of wine began to arrive, the real possibility of the situation began to dawn on the household. Now came on the household जब wine की बात निकली. It was to enrich Tricky's blood. Lunch became a ceremonial occasion with 2 glasses of wine before and several during the meal. He could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution. For a few nights, the fine spirit was rolled around, inhaled, and reverently drunk. Okay, so Adar के साथ ये पूरा describe किया कि how they were feeling. There were days of deep content, starting well with the extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxurious around the fire with the brandy. वो सारा बता रहे हैं कि उन्हें कैसा फील हो रहा था और साथ में जो ट्रिकी था उसके बारे में डिस्क्राइब किया. इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट, बट आई न्यू मिसेस पंफरी वॉज सफरिंग एंड आफ्टर अ fortnight felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection. मतलब अब लास्ट जो टाइम आ गया डॉक्टर को जेम्स हेरियट को बताने का कि yes मिसेस पंफरी is completely recovered. What happened was waiting for and Tricky was waiting for a collection. Within minutes, about 30 feet of gleaming black metal grew up outside the surgery. Gleaming means चमक वाली black metal आ गई surgery के बाहर. The chauffeur opened the door and I could just make out the figure of Mrs. Pumphrey almost lost in the interior. वो almost lost हो गई. Her hands were tightly clasped in front of her. Her lips trembled. Oh, Mr. Heryot, do tell me the truth. Is he really better? Means she's like in shock and she's saying, yeah, is it true? Yes, he's fine. There's no need for you to get out of the car. वो बता रही है कि आप वो डॉक्टर हेरियट बता रहे हैं कि आपको कार से बाहर आने की ज़रूरत नहीं है. I will go and fetch him. Okay. I walked through the house into garden. A mass of dogs was hurtling. Okay, round and round the lawn, and in their midst, ears flapping, tail waving, was the little golden figure of Tricky. Sarah described here. In 2 weeks, he had been transformed into a lethal, hard-muscled animal. He was keeping up well with the pack, stretching out in great bounds, his chest almost brushing the ground, and I carried him back along the passage to the front of the house. The chauffeur was still holding the car door open, and when Tricky saw
mistress, he took off from my arms in a tremendous leap and sailed into Mrs. Pumphrey's lap. जब उसको छोड़ने की बारी आई तो वो इतने स्पीड में चला गया और जाके किसके लैप में बैठ गया, मिसेस पंफ्री के. She gave a startled oh and then had to defend herself as he swarmed her over her, licking her face and barking. उसने उसे लिक करना चालू कर दिया मिसेस पंफ्री को और बाक उस पर भोंकने चालू कर दिया. During the excitement, I helped the coffer to bring out the beds, toys, cushions, pots and bowls, none of which had been used. कुछ भी यूज नहीं हुआ था. वो वापस कौन रिटर्न कर रहा था, जेम्स हेरियट रिटर्न कर रहे थे. As the car moved, Mrs. Pumphrey leaned out of the window, tears shone in her eyes, her lips trembled. वो बता रहे हैं कि जैसे कार निकली उनके आँख से आंसू आ गए, विंडो के बाहर देखने लगी, उनके आँख से आंसू आ गए and her lips got trembled. Oh Mr. Heriot, she cried, how can I ever thank you? This is a triumph of surgery. वो बता रही हैं कि ये बहुत बड़ी सर्जरी है. And she was like, first she was not believing and then she's just thanking and saying him that this was a triumph of surgery. And the word or triumph of surgery, triumph means victory and surgery means operation. Clear? So we have dealt with the first chapter written by James Herriot. Do you think this is a real life episode or mere fiction, or is it a mixture of both? Now here in page number 6 and 7 you are having some questions. Some of these questions you have to write it on your own. Do you think there are also parents like Mrs. Pumphrey? What would you have done if you were in the narrator's place? नरेटर के प्लेस पे जगह पे अगर आप रहते तो आप क्या करते, आपको डिस्क्राइब करना. What kind of a person do you think the narrator of veterinary surgeon is? वो कैसा है? So he is animal loving, we can say. He is very kind. Would you say he is tactful as well as full of common sense? Yeah, we can say he was full of common sense, right? Do you think Tricky was happy to go to home? Was Tricky happy? What do you think will happen now? इसके बाद क्या होगा? So this all questions you have to describe it in your own words and you can write it down. Some of the glossaries are given on the page number 6. Sausages, I just said you, like kebabs, so you can write finely minced meat stuffed into long cylindrical cases and divided into small length by twisting or tying. Next is rheumi, a watery discharge from mucous membrane, especially of the nose or their eyes. Next is listless, lacking energy or we can say enthusiasm. Lumbago, muscular pain in the lower part of the back, that is lumbar region. Next is regime, prescribed course of exercise and diet. Distraught, extremely worried. Scrimmage, rough or confused, struggle. Next is lethal, flexible, convulsizing, recovering from an illness. We have done with the first chapter of your footprints without feet.